Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with next very important subsection, that is about blood vessels. Let's have a look at the big picture. In this subsection, first of all, we'll talk about the comparison of different blood vessels, that is arteries, veins and the capillaries. Secondly, we'll generate certain high yield points about blood pressure, and last of all we'll discuss the rate of blood flow in the blood vessels. So first let's start off our discussion with the comparison, and अपनी discussion का आगाज़ मैं कुछ questions से करूँगा just to test your understanding regarding these blood vessels at this stage. So I have got few options for you. A option is arteries, B option is capillaries, C option is veins, D option is arteries and capillaries, and E option is veins and capillaries. इन ऑप्शंस के लिए पहली स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव हाईएस्ट कंटेंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू. इलास्टिक टिश्यू किन वेसल्स में सबसे ज़्यादा है? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी आर्टरीज. Another statement, which of the following blood vessels have highest content of smooth muscles? तो पहले इलास्टिक टिश्यू का पूछा, अब स्मूथ मसल्स की बात हो रही है, एंड अगेन द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा, दैट इज आर्टरीज. एंड अनदर स्टेटमेंट, वेल्व्स आर एब्सेंट इन. तो बेसिकली जो वेल्व्स हैं ये, अब ये कह लें कि आर्टरीज के अंदर वेल्व्स नहीं होते, कैपिलरीज में भी वेल्व्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वेन्स में वेल्व्स होते हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा गया वेल्व्स आर एब्सेंट इन, सो बेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए डेल्टा आर्टरीज एंड द कैपिलरीज. एंड लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है पल्स इज एब्सेंट इन.